आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि सुपर एलिवेशन क्या होता है, रूलिंग रेडियस कैसे निकालते हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये सबके थियरी पार्ट को हम लोगों ने विभिन्न पीछे प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर लिए हैं। एक न्यूमेरिकल पार्ट इसका कर लेंगे ताकि पूरा कॉन्सेप्ट जो है, जो हमने थियरी पार्ट में किया है, वो क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन इज, ए नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू ए रोलिंग टेरेन has a horizontal curve of radius equal to the ruling radius. Design all the geometric feature of this curve assuming suitable data. Assume width of a pavement is 7.5 meter. So with this एक नेशनल हाईवे है जो कि रोलिंग टेरेन से पास कर रहा है, जो उसका जो हॉरिजॉन्टल कर्व है वो रूलिंग रेडियस के बराबर है। सो फाइंड आउट ऑल द फीचर्स। सो इस क्वेश्चन के माध्यम से जो एक्सपेक्टेशन है कि हम लोगों को क्या क्या निकालना चाहिए, तो एक तो है मिनिमम रूलिंग रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। मिनिमम रूलिंग रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। सेकंड, सुपर एलिवेशन। थर्ड, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। एंड फोर्थ, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एंड इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस and intermediate side distance ISD. This is known as a SSD insert. तो जैसा कि इस क्वेश्चन में है कि जो अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो पास कर रहा है हाईवे का, वो रोलिंग टेरेन के थ्रू पास कर रहा है। तो IRC 52 में क्लासिफिकेशन किया गया है कि कौन सा प्लेन टेरेन होगा, कौन सा रोलिंग होगा, कौन सा माउंटेनस होगा, कौन सा स्टीप होगा। तो IRC 52 में एक बाकायदे इसके डिटेल्स दिए गए हैं। उसमें एक फिगर भी दी गई है, जो ये फिगर है IRC 52 में है, जिसका 10 मीटर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है 6 मीटर। तो जो 60% एंड एबव होगा, ग्रेटर देन 60% होगा, जिसका स्लोप, जो टेरेन मतलब कि जो क्रॉस कंट्री का जो स्लोप स्टीप 60% से एबव होगा, वो स्टीप टेरेन कहा जाएगा। और जो 0 to 10% रहेगा, 0 to 10% होगा, दैट विल बी प्लेन टेरेन। और रोलिंग टेरेन होगा उसका जो स्लोप होगा, 10 to 25%, 10 to 25%, 10 to 25%। और 25% से 60% के बीच में जो टेरेन का स्लोप होगा, 25% से एक्सीडिंग एंड 60% से बिलो होगा, उसे माउंटेनस टेरेन कहा जाएगा। सो बिटवीन 25% टू 60% जो टेरेन का स्लोप होगा, इसके बीच में कोई टेरेन आता है तो उसको माउंटेनस टेरेन कहा जाएगा। उसी हिसाब से उसके डिजाइन फीचर्स होंगे।
हिल में हम जब डिजाइन रोड करने जाएंगे तो उसके कुछ मापदंड अलग होंगे, और जो हम प्लेन में डिजाइन कर रहे होंगे या रोडिंग टेरेन में डिजाइन कर रहे होंगे उसके मापदंड अलग अलग आईआरसी में दिए गए हैं, उसी के हिसाब से रोड की डिजाइन की जाती है। तो जब ये रोलिंग टेरेन से पास कर रहा है, टेरेन टाइप जो है इसका रोलिंग है, परसेंट क्रॉस स्लोप ऑफ कंट्री जो रोलिंग टेरेन होता है वो 10 to 25% होता है। और उसमें जो डिजाइन स्पीड है 468 लेन के लिए आईआरसी में दिया गया है 100 किलोमीटर पर आवर, और जो उसकी मिनिमम डिजाइन स्पीड होगी दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। मीन्स बिटवीन 100 to 80, मतलब मैक्सिमम 100 किलोमीटर पर आवर की रोड डिजाइन होनी चाहिए। बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया, बिल्ट अप एरिया है, दैट कैन बी 80 किलोमीटर पर आवर। अब इसका जो रेडियस होगा, जो हॉरिजॉन्टल कर्व वहां बनेंगे, उसका जो रेडियस होगा वो डिपेंड करेगा उसका सुपर एलिवेशन कितना है। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो कि 7% दिया गया है आईआरसी में, लिमिट कर दिया है, टेकिंग ऑल द व्हीकल डिस्टिंग की। यदि बहुत ज्यादा भी दे देगा तो बुलक कार्ट या जो हाई लोडेड व्हीकल जिसकी सीजी ऊपर जाती है तो स्पीड कम रहेगी तो गिर जाएगा, मतलब कि पलट जाएगा, तो उसके लिए भी उसने लिमिट कर दिया तो 7%। और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लिटरल फ्रिक्शन मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन फ्रिक्शन होगा, उसकी भी मान मडी कंडीशन, आईसी कंडीशन और पूरे कंडीशन को लेते हुए 0.15 कर दिया है। तो जो ई प्लस एफ की जो वैल्यू है दैट शुड बी वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। सो ई प्लस एफ की वैल्यू को वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, एंड वेयर वी इज इन किलोमीटर पर आवर। यदि वी इन सेकेंड है तो वी स्क्वायर अपॉन जी आर हो जाता है। फिर उसको वी को मीटर पर सेकेंड में लेकर के उस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके फिर इसको यूज करते हैं। डिवाइड, यदि कोई वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी है तो जस्ट डिवाइड बाई 3.6 यू गेट इन द मीटर पर सेकेंड। सो लेट अस कैलकुलेट व्हाट विल बी द रेडियस, मिनिमम रूलिंग रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। सो ई की वैल्यू जो मैक्सिमम दी गई है दैट इज 7%, सो 0.07 प्लस एफ की वैल्यू, जो लेटरल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0.15 है। एंड रूलिंग डिजाइन स्पीड वी कैन सी फ्रॉम दिस आईआरसी टेबल 3.2 100 दिया हुआ है, 100 किलोमीटर पर आवर। वी कैन डायरेक्टली इनपुट 100 किलोमीटर पर आवर। सो 100 स्क्वायर डिवाइड बाई 127 आवर। So R will be equal to 100 into 100 upon 0.07 plus 15 equal to 0.22 into 127. So we can solve and get the value of radius horizontal curve. See, anyway, 100 into 100 divide by 0.22 equal to divide by 127 equal to 357.90 meter. Say it should be little greater only, so say 360 meter. So minimum radius of the horizontal curve should be
360 meter. So further, this 360 meter we will use to find out the super elevation, design super elevation, and if design super elevation की value more than 7% आती है, then we have to check for the lateral coefficient, lateral frictional coefficient. So जो डिजाइन किया जाता है 75% ऑफ दी डिजाइन स्पीड को लेकर के डिजाइन किया जाता है, जिसे मिक्स ट्रैफिक के लिए भी बोलते हैं। तो उसका जो उसमें फ्रिक्शन, लिटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को इग्नोर किया जाता है एंड ई वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है। सो ई इज इक्वल टू गिवन बाय ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225 into r, and we know that it is taking 75% value of actually b square upon 127 r, and if you input 0.75 b square, then you get this b square upon, means we can from first principle also we can get 0.75 whole square into b square upon 127 r. So we get this is equal to b square upon 225 point something 0.4 and r. So for the design purpose we take b square upon 225 r. So v square is 100 into 100 divided by 225 into r, just we found out 360. So 100 into 100 divided by 225 divided by 360, we get 0.123. Value of e 0.123, which is greater than admissible value of 0.07. Hence super elevation is limited to 0.07 only. Hence super elevation of the curve is limited to super elevation of the curve is limited to 0.07. Now since value of super elevation has come more, so we need to check it for the coefficient of lateral coefficient of friction, which is given by E plus F equal to V square upon 127 R. Value of E is limited to 0.07. F we need to find out. V square is 100 square upon 127 into 360. So solving it, we get 0.07 plus F plus F. So 100 square divided by 127 divided by 360, we get value of 0.218. 0.218. So value of F will be 0.218 minus 0.07, which is equal to minus 0.07, which is equal to 0.148, which is less than admissible lateral frictional coefficient, which is 0.15. So less than 0.15. Hence horizontal curve provided of 360 meter is okay. Hence जो radius of the curve है वो radius of curve is admissible. Okay. So by taking the calculation super elevation value
0.07, the curve of 360 meter is more than okay for this design. So length of transition curve. Length of transition curve we determine from three criteria: based on centrifugal acceleration, based on super elevation, and based on empirical formula. So based on super elevation, उसमें जो मैक्सिमम होगा बेस्ट वाला सुपर सेंट्रीफ्यूगल से निकालेंगे, सुपर एलिवेशन से निकालेंगे और एम्पिरिकल फार्मूला से निकालेंगे। जो मैक्सिमम होगा उसको हम एडॉप्ट करेंगे डिजाइन बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होता है एलएस, दिस इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन 46.5 into C into R, where C is 80/75 plus V, and this value of C should be limited to 0.5 to 0.8 meter per second cube. So 80 upon, find out value of this C, centrifugal acceleration जो होता है rate of centrifugal acceleration. So 75 plus V is 100, 80 upon 175, which is equal to 80 upon 175 is equal to 0.457, 0.457, which is less than, which is in between 0.5 to 0.8, hence value is okay. So length of transition curve will be VQ 100 cube upon 46.5 into C, value of C is 0.457, and value of R is 360. So we can find out 100 cube, 100 into 100 into 100, 60, divide by 46.5, divide by 0.457, divide by 360. So we get the length of 130.71 meter. Else we get length of transition curve 130.71 meter. So from the centrifugal, based on centrifugal acceleration. Now from the since it is a 7.5 meter width road, so we can rotate the road along the center line. So we can rotate the road along the center line, and we find out the total super elevation E, and then we provide E by 2 here and E by 2 here, and the total transition length will be required for from the super elevation criteria when we are rotating the pavement from the center line to attain the super elevation. So LS will be E by 2 into width of the pavement into rate of gradient. जिस gradient से इसको दिया गया, तो it is 1 in 150, वहाँ पे IRC में दिया है, so that is 150. Now we found the E value of E. It is 0.07, limited to 0.07. So we can say 0.07 divided by 2
into 7.5 into 150. So let us calculate. Point 0.07 divided by 2 into 7.5 meter into 150. So length from this criteria has come 39.375 meter. Means 39.375 meter will be required to attain the super elevation what we have calculated, that is 0.07%. So it will take 37.5 meter length. We had already studied how to attain the super elevation in our previous video. So with that respect, when the pavement is rotated from the central line, it is required 37.5 meter. And from the empirical formula, IRC empirical formula as given in IRC, as given in IRC. That is length of transition curve 2.7 V square upon R. So 2.7 into V square is 100 into 100 upon radius of curve 360 meter. So we can calculate 2.7 into 100 into 100 divided by 360. So equal to 75 meter. So length of transition curve based on the centrifugal acceleration, it has come 130. It has come 130.71 meter. Based upon the requirement of providing super elevation, it is 39.375 meter, and as per empirical formula given in IRC, it has come 75 meter. So जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इसमें लेना होगा, दैट इज लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फॉर डिजाइन, it will be say 131 meter. 131 meter. So 131 meter will be taken the length of transition curve. Now stopping side distance. किसी भी व्हीकल को रोकने के लिए जो डिस्टेंस लगती है, दैट इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. इसका डिटेल में हम लोग एक वीडियो में पढ़ चुके हैं. तो इसमें दो पार्ट होते हैं. एसएसटी के दो पार्ट होते हैं. स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के दो पार्ट होते हैं. एक होता है लैग डिस्टेंस, दूसरा होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस. So lag distance is given by Vt and braking distance V square upon 2 times G into F. ये हमको ये है when V is in meter per second. When V is in meter per second, small v we can say. Then for capital V, when V is in kilometer per hour. When V is in kilometer per hour, so 0.278 into capital V into T, where T is 2.5 second perception time जो दिया गया 2.5 second plus V square upon 254 F. So let us input the value 0.278 into V is 100 into 2.5 second is perception reaction time plus 100 whole square upon 254 into यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगेगा.
जो कि जिसकी वैल्यू 0.35 से जो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, उसकी वैल्यू 0.35 टू 0.4 होती है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है उसका जो लॉन्गिट्यूडिनल कोएफिशिएंट होता है वो कम होता जाता है। तो यहाँ इसकी वैल्यू 0. लेट अस टेक 0.3। तो इसको सॉल्व करते हैं। सो 0.278 into 100 into 2.5 equal to 69.5 meter leg distance plus braking distance 100 into 100 divide by 254 divide by 0.35 is equal to 112.48 plus 69.5 equal to 181.98 equal to 181.98 meter. So stopping side distance here value of f is taken 0.35. So stopping side distance is 181.98 meter, and we know that intermediate side distance is 2 times stopping side distance. So we can find out intermediate side distance ISD is equal to 2 into 181.98 meters. So it will be 2 into 181.98 equals 363.96 meter. Say ISD intermediate side distance. Say ISD, that is intermediate side distance, is 364 meter. So hope with this solution all the concept of how to find out minimum rolling radius of horizontal curve, how to find out stopping side distance, how to determine the super elevation, how to determine from all the three conditions ट्रांजिशन लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। फर्दर वीडियोज में हम लोग वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में स्टडी कर रहे होंगे। थैंक यू।